Hi guys, this Ramzan I'm gonna give you the trick of the trade, the sure shot formula of losing fat. Let us now understand what is fat loss formula or weight loss formula. Weight is nothing but mass. We all agree to it. Mass is made up of muscle and fat, especially human body. If we want to lose on the weight, we do not want to lose on the muscles. So the ideal way of reducing your mass is to reduce your fat. So fat loss is the ideal way. How can we do fat loss? For 1 kg of fat, there are around 7,700 kilocalories, which means आपको 7,700 kilocalories extra खानी होगी to gain 1 kg of fat. So if you want to lose 1 kg of fat, 7,700 kilocalories stored calorie of the body has to be down. How can we do that? First, for that we have to understand our maintenance calorie. Maintenance calorie calculate करना is very easy. How can you do that? आपको आपकी body weight से into 32 करना है. For example, somebody has a body weight of 60, तो 60 into 32 1920 kilocalories उनका maintenance calorie है. जब भी आपको maintenance calories को कम करना पड़ेगा to lose fat. तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हम है ना थोड़े दिन वी कैन गो ऑन अ फास्ट. सो इफ़ यू गो ऑन अ फास्ट, आपको पूरा दिन आप कुछ नहीं खाते तो 1920 पर डे आपका किलो कैलोरी कम होता है, तो 4 दिन में आपका 1 kg फैट लॉस होगा. तो अगर आपको 4 kg ऑफ फैट लॉस करना है तो आपको ऐसे 16-15 दिन भूखा रहना पड़ेगा, विच इज़ नॉट आइडियल. वट इज़ द आइडियल वे टू डू दैट इज़ टू गो ऑन अ कैलोरी डेफिकेट डाइट, विच मीन्स आप अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 500 किलो कैलोरीज कम खाएं. जब आप 500 किलो कैलोरीज कम खाते हैं तो 15 दिन के अंदर आप 1 kg मतलब 7,700 किलो कैलोरीज लूज करते हैं, तो 1 kg ऑफ फैट लॉस हो जाता है. ऐसे ही अगर आपका 4 kg का गोल है तो आपको 60 डेज तक 500 किलो कैलोरीज कम खानी होगी. This is very simple, but there are so many different things which I'm going to explain you in the next video. Follow me, also DM me if you have any questions or if you want me to make a Ramzan special diet for you. Have a great day. Bye.